Sip Vivo, and many Sip Rekha, many new people who are joining the call. Welcome. And today is Sunday, and therefore the subject is an open subject of Ask AiR, open session. The beauty of today is you can ask any question that you like related. Don't ask me how to make samosas because I can't help you. But yes, Rajesh Rao and Rekha. Starting with Rajesh Rao. Sir. Unmute Rajesh Rao. Sir, Shivam, sir. Shivam, sir. My question is very peculiar today. How do I know I am on right track? Good. It's a very simple question. When I'm going from Bangalore to Bombay, and it shows 400 kilometers, as I'm driving, if it shows 399, 398, 397, 396, it means I'm in the right direction. But if it shows 410, 420, 430, means my direction is wrong. But it's Rajesh, you asked a very simple, most critical question. I'll tell you why, Rajesh, why I'm telling this is very important. Before I found my guru, there were so many people who were trying to misguide me. And they were telling me all the wrong things. They were telling me all completely wrong things. Imagine I followed them. Let me tell you one small story. This story I have not told anybody in my life. Let me tell you the story. I was probably 6 years old or so, maybe 6 years old. And I was in Bombay Chowpatty beach with my mother and father on the beach. And I was playing in the beach and they were playing with me. Suddenly, they saw I was missing. There were thousands of people on the beach. On the beach, how many people are there? Thousands. And they started crying. Searching, running. My mother running one direction. My father, this is a story they told me, running in all directions. What had happened is, when the beach was happening, one camel came there. And I started walking behind the camel. I just was so enamored by the camel. As I was a 6-year-old, I was walking behind the camel, I reached the end of the beach. Then when they finally tried to, when all the people went home in the evening after sunset, and the camel was walking, they saw me walking behind the camel, still going, and I was there with the camel. So I'm saying, Rajesh, how do we know we are in the right direction? If we can improve our level of peace, if we can improve our communication with God, if we can feel that we are becoming better souls, if we feel that we are overcoming ignorance bit by bit. Rajesh, you are blessed because you are overcoming ignorance and you have reached that level of, people are completely lost in this world. Let me tell you, people are completely lost. They have no clue. You're asking, Rajesh, you're asking the question, how do I know whether I'm in the right direction? You know what people will say? How the hell it matters whether I'm in the right direction? You just try to talk to some people, their whole approach is how the hell it matters. So you are in the right direction. I hope. Now, one more question. Yes, sir. Administrator Rajesh. Yes, sir. I want you to do one Friday session on indicators of which. Have we not done? Girish, yeah, Sudeep, have we done? What have we done, Sudeep? What is it? We have done something, but okay, we will do again. It's a long time. We will do again, but we have done long back. Maybe Rajesh, before you joined, we have done to know whether you are in the right direction. I don't remember the answer. Please check what is we will do one Friday session. Thank you, sir. We are going on to Bliss Krishan. Bliss. Hi, Shwam dear. Shwam everyone. I would like to know, many of us are fear of mistake.
how to know a fear of mistake. I don't get you. When we are afraid, we're afraid of mistake. When we have fear of make a mistake, Okay. how to know we are in right direction and we don't Okay. get fear. To make no, you don't Because want. No, you many are you. people are fear to make something and to, oh my God, what I am doing there. You understand when I try to So explain? you're talking about the fear, or you're talking about the mistake? What are you talking more about? The about. Both. Because sometimes when we choose something, we know we don't know why, but we have fear because it's something we don't know and we don't know how to. I don't know how to explain, but we don't know how to. I want to explain, but I don't know whether I have understood your question correctly. So Yeah, I understand. But you, if I want to go somewhere and I have never been there before and I have fear to go there, if I want to go in a forest and I have fear of forest, how to get rid of the okay, fear? got it. So see, fear, FEAR, is false expectation appearing real. Now Yeah. there's a difference. There's a difference between a fear and a danger. Suppose there's a tiger. Suppose there's a tiger. Can I put my hand in the mouth of the tiger? Can I put? No. Because he can eat my hand. It's not a fear. It's a danger. So we should be able to discriminate between a fear and a danger. Fear is not real. Danger is real. So it's Fear a is, mind. Fear is in the mind. The yeah. danger is from the intellect. When the intellect tells you, bless, for example, let me tell you, you are on the top of a 40-floor building, and you're dancing. And if you slip on the top of the building, you know you will fall down 40 floors. Is that fear or is it danger? It's danger. Yeah. So you have to be able to discriminate fear and danger. Okay, I hope it explained. Thank you, Krishna. Yeah, thank you so much. You. Krishna. Yeah, good evening, sir. Good evening. Sir, one equation which you during a call, you had said one equation like man minus self is equal to God. Can you elaborate? Hello? So that is what my Guruji gave me, and I could not understand for 8 months. So man, Krishna minus ego equals God. Okay. God plus ego equals Krishna. So if you drop your ego, here self means ego. The word self is deceiving. I thought it was soul. So that was the confusing part. Okay. So this is the formula of enlightenment. If somebody wants enlightenment, it's very simple. It's just if you can drop your ego, you're enlightened. So, but I could not understand this equation for 8 months. Man minus self equals God. God plus self or ego equals man. Yeah. So this is the challenge. Okay. Anything else, Krishna? Yeah, one more. That's a small doubt. When you say Chit Anand, yeah, can you hear me? Anand. Yeah, Chit Anand. Some people were like, is it truth or existence? Some say it is existence, consciousness, bliss. Some say it's not some. You are reading too many books. When you're reading too many books, the problem is that. See, what is the meaning of existence? Can you tell me what is the meaning of existence? I also have read it in many books. It says Sat is existence. What is this meaning of existence? the real isness. Isness. So this is only complicating it. So I think that's why I told you my whole objective of this Zoom call is to simplify. Sat Chit Anand means
Sat is the truth. Chit is consciousness. If you have locked yourself in the consciousness of the truth and the intellect is awake, then you have reached the state of Ananda. A state of Ananda, Sat Chit Ananda. The Ananda that comes from the Chit of Sat, the consciousness of the truth. See, because what happened now, suppose I ask you to explain that word existence. And existence, consciousness, bliss. Can you explain to me? Nobody can explain. Yeah, you can. Explain. Because, you know, when we exist in consciousness, right? That isness So- is in consciousness. Even a So how will thought is in consciousness. How will that isness cause Ananda? Because it is in consciousness. What is this in consciousness? Consciousness is a vast oneness. No. What is that isness that is in consciousness? What is that isness you're talking about? Everything, even a pen or a book, everything it exists, no? No. Because No. something The pen doesn't have consciousness. it a pen, a exists book. in consciousness, right? How does that matter? If that exists in consciousness, mithya, it's maya. It's only it's posimom. It's just a vibration of energy. See, what I... Okay, Yeah. then let me Yeah. ask you something. Yeah. Is truth, you say, is truth equal to consciousness? No, Why should it be two different terms? because it is two different terms. There may be truth and you may not have consciousness of the truth. There may be consciousness and you may not have consciousness of truth. You may be conscious of the sky. You may be conscious of meditation. I have a doubt there, sir, because that consciousness is when you speak about consciousness, you are speaking about the ultimate consciousness, right? No. See, consciousness is that's why I told you that last time you asked the question. Consciousness is of two types. One consciousness is the soul gives consciousness or life. That life power is consciousness. You can say the bird is conscious. You can say somebody is conscious or somebody is even unconscious. Suppose somebody is unconscious. That is one type of consciousness. The second consciousness is awareness. You are speaking about awareness, right? Yeah. No, but consciousness means both. Right. That is the truth. So that awareness is a truth, right? The oneness. No, in that awareness, there must be truth. Suppose you are aware. Suppose you are aware of the beach and the waves and the boats and the clouds and the skies and the people on the beach. How does that matter? That is only awareness. You want to be awareness of Sat. You want Sat Chit. Then only you will have Ananda. Otherwise, you will not have Ananda. Sat Chit Ananda. We've discussed this before many times. You can see, you contemplate and come back to me. Suppose you know the truth. Suppose you are a master, you have a notebook. In the notebook, you have about 100, 200 truths about life. Will it help you? You know the truth. You are not conscious of the truth. No use. Sat independently is of no use. Chit independently is of no use. You need to have Sat Chit to have Ananda. Then Satchidananda. Please contemplate. I'm here for next 20 minutes more. Krishan Singer, come back with your thought. Krishan. शिवम गुरुजी, Shivam, sir. मैं लास्ट 5 मंथ से आपके कॉल पे हूँ और मैं अभी चेतना में रहता हूँ, कॉन्शियसनेस में रहता हूँ. मैं माइंड को आगे नहीं आने देता, बट जब मैं 50% या 60% माइंड को अवॉइड करके कॉन्शियसनेस में रह के इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ में और इंटेलेक्ट को यूज कर रहा हूँ, उसके बाद में माइंड में वो चीजें बाद में आती है और अंदर ही अंदर गुस्सा उठता है. एंगरनेस सी रहती है कि मेरे को ये बोलना था. सपोज मैं 5 महीने पहले किसी सिचुएशन में रिएक्ट करता था. अभी Now मैं you're not reacting. Not reacting. So where is anger coming? When is anger coming? After that meeting, जब मैं शाम को होता हूँ तो मेरे को लगता है यार मैंने वो बोला कि ये क्यों नहीं बोला उस बंदे को, मैं ये भी बोल सकता था, ये भी बोल सकता था. Very good. Because आपका माइंड वापस आ गया. आपका माइंड एंड ईगो मी वापस आ गया.
Anger belongs to the ego. कभी ये आंख से एंग्री नहीं होता है, कभी ये हाथ को मारता नहीं है. The minute your ego separated you from that person, you got angry. अभी जब शाम को जब मैं बैठता हूँ रिव्यू करता हूँ डे का, और मुझे ये लगता है कि मेरे को ये चीज बोलनी चाहिए थी, मेरा माइंड बोल रहा है कि ये चीज बोलनी चाहिए थी, मुझे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए था, जो भी करना था. ये रिव्यू बंद करो. ये रिव्यू करने से पहले माइंड को स्टिल करो, कॉन्शियसनेस को जगाओ, कॉन्शियसनेस में रिव्यू करो. Don't review from today onwards till you are in consciousness. After you are in consciousness, you should review it. Okay, sir. Then you come and tell me whether you are peaceful or not. Okay. See, even Krishna was talking about this. You know, in this call, we are very practical. जो है वो है, ऐसा कोई गोलमाल वालमाल नहीं है. There's no गोलमाल business. जो सीधा है वो सीधा है, जो नहीं है तो नहीं है. We are very clear about it. So कुछ नहीं होता है तो you must come and tell, नहीं ये sorry boss नहीं हो रहा है, ये आपकी बात नहीं हो रहा है. Then we have to understand क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है. नहीं, ये चीज तो है कि कॉन्शियसनेस में रहना है, माइंड को स्टिल करना है, और एक टाइम आएगा जब हम माइंड को किल कर देंगे. ठीक है, अभी स्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे माइंड फिर आ जाता है कि यार ये तो बोलना नहीं, ये तो बोलना नहीं. तो माइंड को बोलो साला गोली मारो, तो साला shut up. You माइंड को थोड़ा, you have to watch it, catch it, latch it. You have to watch it, catch it, latch it. उसको बांध दो. मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ कि शाम को सोने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा मेडिटेशन करूं, ताकि नेगेटिव. Good. Meditation by the silence, still the mind. Silence is very important. Silence में, you know, कल का टॉपिक क्या है? What is our greatest sin? सबसे बड़ा पाप क्या है? ये मुझे साइलेंस में आया. ये साइलेंस में मुझे इंस्पिरेशन आता है. कल या परसों का टॉपिक है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिन. सोचो, मर्डर है, रेप है, चोरी है. मैं आपको अभी बता रहा हूँ. वी विल टॉक लेटर. वी हैव अ न्यू पर्सन इन द कॉल, लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. लक्ष्मीकांत, माय डियर लक्ष्मीकांत, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क. यस सर, प्लीज बोलिए. व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? सर, आपने जो अभी एक वर्ड बोला था, सत्चित आनंद. हाँ जी. अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने डिफाइन भी किया था, सत अलग है, चित अलग है, और वो उसके बाद आनंद होता है. प्लीज स्पीक लिटिल लाउडली, आई कांट हियर यू. हाँ, सत अलग है, चित आनंद है. हाँ, फिर आपका क्वेश्चन. और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नेचर के करीब जाता हूँ, नेचर, आपने जब बताया ना, हम समुद्र पे जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, जंगल में जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. नेचर में अगर हम मेडिटेशन करते हैं, नेचर में जाके हम मेडिटेशन करते हैं, तो नेचर के साथ हम एकरूप हो जाते हैं. ओके. तो उस कंडीशन में क्या हम आउट ऑफ बॉडी जा सकती है हमारी सोल? आउट ऑफ बॉडी जाना एक मजाक की बात है. There is nothing like out of body experience. ये जो लोग बात करते हैं ना लक्ष्मीकांत, कि if we have out of body experience, ये out of body experience बोलने की चीज है. अच्छा, ये होता नहीं है. हाँ, आउट ऑफ बॉडी कोई जाता नहीं है. हम आउट ऑफ बॉडी चले जाएंगे तो मर जाएंगे, खत्म होगी बात. ओके. ये हमने कहानियां थोड़ी सुनी है. कहानियां बहुत है, सांता क्लॉज की कहानी बहुत सुनी है, लेकिन तो सर मैं क्या करता हूँ, मैं समर्पण ध्यान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 12 सालों से. समर्पण ध्यान, समर्पण मेडिटेशन. ओके. बहुत बड़ा ग्रुप है, आप नेट पर भी ये कर सकते हैं. ओके. तो वहाँ पे क्या सिखाया गया है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. अगर मैं अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानने की जो प्रक्रिया है, वो काफी समय तक अगर मैं ये अपने आप को बोलता हूँ मेडिटेशन में, तो एक धीरे धीरे क्या होता है कि आप बॉडी के लेवल से आप आत्मा के लेवल में चले जाते हो, शरीर के स्तर से आप हट जाते हो.
आपको ये बॉडी से आत्मा की कंडीशन में जाने के लिए आपको अनुभूति चाहिए. यू नीड एन यू नीड हाँ, और वो अनुभूति होती है ज्ञान योग से. यू नो समथिंग लक्ष्मीकांत, आत्मा क्या है? आप लोग मानते हैं आत्मा ही परमात्मा है? मानते नहीं मानते? मानते हैं ना, परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश है हमारे शरीर में. फिर एक बार वो एहसास हो गया तो खत्म हो गई बात. हाँ, ये तो पता है. अब जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हम लोग ज्यादातर मेडिटेशन क्या करते हैं, कलेक्टिविटी में करते हैं, जो आत्माओं की सामूहिकता होती है. ना 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 सुनिए, you can I don't mean to criticize what you're doing. I'm only responding to what you're saying. देखिए, आप पहली बार आ रहे हैं कॉल पे? आप कैसे आए कॉल पे? How did you come? ये फेसबुक से ही आया. अच्छा, every day 8 o'clock we are on this call every day. Okay. The moment you get, you know, soul, आत्मा क्या है? सोल है, करेक्ट? सोल है. SOUL का मतलब है स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ. मतलब आपकी आत्मा जब तक आप में है वो अलग है, मेरी आत्मा जब तक मुझ में है अलग है. अगर ये दो आत्मा निकल जाते हैं मौत पे, दोनों एक हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं. हाँ, तो we have to reach that state of realization. अगर हम उस अनुभूति की स्थिति पे पहुंच जाएंगे, देन तो ऑटो मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं. हम 24 घंटे मेडिटेशन में है. हाँ, जो अनुभूति करता है ना, उसको मेडिटेशन का मतलब क्या है जानते हैं आप? मेडिटेशन का मतलब है मन को स्थिर करना. माइंड जो है, माइंड को साइलेंट करना. यस. लेकिन माइंड है, आपने कभी माइंड को देखा है? नहीं देखा है. कहाँ है माइंड? फिर क्यों माइंड को स्थिर करना? माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स. ये ख्याल है. ख्याल है. यस. और अगर हम ये ख्यालों को हम अगर मन की स्थिति से हम चित्त में रहेंगे, चित्त में विवेक जाग जाएगा. चित्त में जब विवेक जागेगा, हमें कोई ख्याल नहीं होंगे. ख्याल नहीं होंगे. तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो मुझे थॉटलेस बना सकती है? मेडिटेशन विल ओनली टेक यू up to one point. It cannot take you beyond that point. Meditation will take you to the position. I'm not saying we should stop meditation. We can continue, but meditation has to become realization. Meditation has to lead to liberation and unification. ये बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन समझते हैं मेडिटेशन में एक लाइट आएगी, पर्पल लाइट आएगी, ग्रीन लाइट आएगी, तो ये दर्शन होगा. ये ना, ये सब परी कथा है. ये परी कथा है. हाँ, तो ये सब इमेजिनेशन है. हाँ, ये माइंड का ये वापस माइंड में फंस जाना है. हाँ, यानी ये इमेजिनेशन है. हाँ, यू हैव टू मूव. लक्ष्मीकांत जी, करना नहीं है, प्लीज करना नहीं है. आप ये कॉल पे आइए, 2-4 दिन, 15-20 दिन आइए. यू आस्क योर क्वेश्चन, यू विल सी. यहाँ पे 100 लोग आते हैं, 100 लोग बहुत आगे बढ़े हैं, और हम आगे बढ़े, मेडिटेशन भी करते हैं, शांत में भी रहते हैं, लेकिन हमें आत्मा ज्ञान चाहिए. वी वांट. हाँ, ये सोल क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, ये एहसास होने से आदमी मुक्त हो जाता है. यस. So please join us. Thank you for your presence today, and please join us on a daily basis. Thank you, sir. Thank you, Lakshmikant. Yes, we had a new. Whenever a new person comes, I try to explain a little more, because after all they are new. Sukeshini, yes, Sukeshini. Today is Sunday. You have a free time to ask any question. And Krishna, if I have not answered your question fully, I am available. Good evening, sir. Yes, Sukeshini. Good evening. I had a question. We are in consciousness when we are alone, and we are, in our thoughts. Okay. But what happens is, when we are in communication with somebody, say in the family or even in the office sometimes, what happens, certain things of the past does trigger, and our behavior depends on that. Let me tell you one thing. You said something, I want to correct that, okay, if you don't mind. Yes. Sometimes you may be with 100 people and you can be in consciousness. Okay. Sometimes you may be alone and you may not be in consciousness, because even though you're alone, your mind is creating pandemonium. Mind is creating galata. Correct. So please don't think that being alone or being with people affects your consciousness. No. Okay. Being in consciousness means you should be able to be a master of your mind. You should become a monk.
How do you become a monk? You still the mind. See, Lakshmikant spoke about meditation. He said he from 10, 15 years, he's doing meditation. I know many people who are doing meditation for many, many years. After many, many years, why that we are not able to reach a realization? What is the problem? The problem is that we are not able to still the mind. Sukeshni, so Yes. you may be in the office, but in the office, if you just close your senses, if you close your eyes, if you try to shut off it in a corner, and Okay. you just try to be in a consciousness, which means you activate your intellect. You manually activate your intellect and stop your mind. You stop, just like you can stop walking, talking, singing. You stop thinking. Okay. In that point, you will reach a state of consciousness, stillness. Then your intellect will come awake. That is the state you want to be in. Okay. Sir, and how do I, what is the process of, not getting into the past situation? Because there's no past, only mind can go. Can anybody go to yesterday? If I give 1 million No. also, can you go to yesterday? No. So that means, so who's going to yesterday? Who's taking you there? My thoughts, yeah. Yeah, your thought is your mind. So immediately snap out of it. Immediately say, stop it, stupid. Tell yourself, stop it, stupid. There is a past is over. I can do nothing about it. Okay. The moment the thought comes, stop it, drop it, chop it, drop it. Okay. Because that thought is a deadly thought. It's killing you. It's going to destroy you. Sorry. So immediately, what's the point? I'm asking Sukeshni. What is the use of going to the past? Is there any use? No use, sir. Actually, it is spoiling the present moment. Completely wasted. It's stealing your present moment. Then what is the use? Actually, see, I am practicing. Luckily, my husband also sometimes hears and he says, no, I want to hear. And that's a good thing. So I keep telling him some answers from here also to him. So that is really helpful, actually. No. So see, sometimes it's always, if two of you can hear together, it's a great thing. But sometimes if a partner is not willing to listen, this man is talking some nonsense, I don't want to listen, then obviously then it becomes the difference of opinion. But you have to listen because you want to learn. Correct. So sometimes we agree to disagree, that's all. Yes. Sanjay, but thank you. Sanjay Bell, please unmute. I missed Sanjay Bell. Sanjay Bell, your time, please. Unmute and speak, Sanjay ji. Soham sir. Show him, sir. My question is Hindi meaning of Sip is Atma and Supreme सबसे बड़ी immortal power, never destroyed, and Shakti means power in Hindi. And वो मैंने पहले भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इसका एग्जांपल देके थोड़ा समझा सकते हैं प्लीज? मैं लिखा नहीं। आप सिप के बारे में पहले आपने पूछा, राइट? जी। तो सिर्फ हम इंग्लिश में बोलते हैं सिप, और हिंदी में बोलते हैं हम प्रभु पास है, कण कण में है, प्रभु है शक्ति, सर्व शक्ति वो है, प्रभु है अनंत अनादि वो है, प्रभु है अमर सर्व शक्ति वो है पास दूर नहीं, कण कण में प्रभु शक्ति। तो इंग्लिश में बोलते हैं सिप, हिंदी में हम बोलते हैं प्रभु पास है। पास मतलब परम अमर अनंत अनादि सर्वशक्ति। ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर। सिप हो गया। अभी आत्मा क्या है? आत्मा एक प्राण शक्ति है, आत्मा एक जीवन शक्ति है। आपका जन्मदिन कब है संजय जी? आपका जन्मदिन कब है? 20 जुलाई 1969, जब चांद पे कदम रखा था। 20 जुलाई, करेक्ट? नील आर्मस्ट्रांग। आधार कार्ड में, पासपोर्ट में सब यही है? जी, सेम। जानते हैं ये बर्थडे आपका फेक है, झूठ है? जी, इससे पहले भी जन्म लिया होगा मैंने। कभी आपका जन्म कभी हुआ? जी, इससे पहले पता नहीं। अरे आपको नहीं पता? इससे पहले हाँ पता है। जन्म कब होता है? हम आते हैं धरती पे, वो आपके बर्थडे डेट पे, हमें जन्म कभी हुआ? हमारा हमारी पहली जो कितने महीने पहले? 9 महीने।
हाँ, वो तभी आपका जन्म हुआ, तभी आपकी माँ बन गई जी। तो वो हाल में वो कण में जो पहला कण है उसको युग्मंज बोलते हैं ना, जाइगोट. यू आर दैट तत्त्वमसि. तत्त्वमसि मतलब आप वो हो, वो जो शक्ति है, जो पहले कण में आपकी शक्ति है, वो आत्मा, वो ही आप है. सोहम. हाँ, सोहम. सेकंड क्वेश्चन क्लियर. और क्वेश्चन एंड मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इसका एग्जांपल देके प्लीज समझाएं तो बहुत अच्छा होगा. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ. तत्त्वमसि नेति नेति तुम हो वही, ये नहीं महावाक्य ये कहता है सही, तुम एक आत्मा हो तन मन नहीं. तो ये उपनिषद कहता है, वेद क्या कहते हैं, तत्त्वमसि नेति नेति. जब आपका जन्म हुआ था 9 महीने पहले शरीर था, शरीर तो नहीं था. शरीर बाद में आया, माँ के गर्भ में, माँ की कोख में शरीर बाद में आया. एक दिन ये शरीर जल जाएगा और लोग बोलेंगे संजय गुजर गए. लेकिन ये जो शरीर जो है, शरीर को आपके फैमिली जलाएगी. क्यों जलाएगी? उसका मतलब आप ये नहीं है ना, नहीं तो क्यों जलाते. नहीं तो आप जिंदा होते हुए आप सो रहे हैं, आपका शरीर कोई जलाएगा? तो दिस इज द प्रूफ दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड. एक समुद्र में एक लहर निकलता है. वो क्या लहर समझता है मैं लहर हूं? लहर कहां से आता है? समुद्र से आता है, समुद्र में वापस मग्न हो जाता है. वैसे हम आत्मा है, हम परमात्मा से आते हैं, परमात्मा में वापस चले जाते हैं. कभी परमात्मा से आते हैं 9 महीने पहले, जब युग मंच में हमारा जन्म होता है, हमारी कंसेप्शन, आई डोंट नो हिंदी वर्ड, वी आर कंसीव्ड इन 9 months बिफोर, तभी हमारा जन्म होता है. एक दिन मृत्यु पे आत्मा निकल जाती है शरीर से. दिस इज द प्रूफ. इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि हम वो हैं. हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है. So please continue to ask questions, Sanjay ji. Thank you. We have got next. I think is it Atmatray? Atmatray, continue please. हाँ, शिवम सर. शिवम सर, जब हम नेचर में जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो खुल जाते हैं, यानी फ्री होते हैं एकदम. तो और घर में है तो इतना सिकुड़ के रहते हैं, यानी why it happens, sir? Because घर में so many people are there, so many people are talking. वो नेचर में कोई disturbance नहीं है, शांत है, mind is not wandering. I see. हाँ. But same thing, अगर आप mind, suppose you are in nature, suppose you are in the same nature and you are sitting down there and दो कोबरा आ जाते हैं, फिर क्या होगा? आपके सामने दो कोबरा आ जाते हैं, फिर डर आएगा. तो प्रॉब्लम ये है, नेचर में कोबरा कभी कभी आता है, घर में तो कोबरा हर दिन में है. सही है सर. बिल्कुल. मेरा मतलब ऐसा कोई कुछ बुरा मतलब नहीं है. नहीं. What happens is, हम हर एक पर्सन का कैरेक्टर अलग है, और स्पेशली when there are people who are not spiritual, फिर बोलेंगे चलो यार पाव भाजी के लिए चलेंगे, चलो चाट खाएंगे, चलो मूवी चलेंगे, चलो मॉल जाएंगे. अभी किसी को मॉल जाना है तो क्या करेंगे? मॉल जाना ही है ना. कोई परिवार में मॉल को जाना है तो फिर क्या करेंगे? जाना है. कोई मैं परिवार में बैठा हूँ, कोई बोलता है चलो पिक्चर देखेंगे. अरे पिक्चर मैं 2 घंटा क्या, मैं 2 मिनट नहीं बैठ सकता हूँ. 2 minutes. I cannot see rubbish movie for 2 minutes. People see rubbish movie for 2 hours, for 3 hours. For me, if I watch movie for 2 hours, means I need to take 2 Dolo, 2 टैबलेट. एक टैबलेट से काम नहीं चलेगा, 2 हेडेक का टैबलेट चाहिए. सही है. तो in nature, why I go with Atmatray, मैं क्यों भाग जाता हूँ, why I run away? All my travel is retreat. Retreat मतलब, even Jesus बोलते थे, when Jesus was having a problem, Jesus के time में वो boat में बैठ के, he used to sit in a boat and he used to go into the ocean. He used to go away into the ocean, just to be away from society, away from people, away from thoughts. Correct.
इसलिए लोग जो so many people they get up in the morning at 3 o'clock and they say 4 o'clock morning Brahma Muhurat. They ask me, अभी ब्रह्मा से ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, ब्रह्मा से कैसे बात करना है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब नहीं कि ब्रह्मा 4 बजे उठ के आपसे बातचीत करेंगे. ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है that 4 o'clock in the morning there is no mobile, there is no movie, there is no tandoori, there is no pakoda, there is nothing. At 4 o'clock in the morning you are in the Brahma Muhurat ka matlab hai you are in still, you are one with it. You become one with the divine. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Vijay Kumar is not on video. Lakshmi ka Rajendra ji and then Bliss. Bliss, sorry, Bliss. First Bliss and then Rajendra. Who you can unmute? Who you unmuting? Rajendra and then Bliss. Yes, Rajendra. Shivam sir. Shivam sir. So, sir, it's not a question. ये थोड़ी सी वो riddle है मेरे दिमाग में. We talk about Atma, we talk about body, we talk about mind. We say Yes. that body is a manifestation of Atma. Whatever it is manifestation of Atma. But it is Panch Tattva, made of Panch Tattva. Okay? 5 elements. That I know. Yeah, Okay. yeah, Basically, yeah. it is manifestation. Tattvas are also manifestation of the Yes, five supreme. absolutely, Okay. absolutely. So we are as good as nature, which is a part of nature. Okay, sir? Yes, absolutely. Then we say that we also, but this Atma has to perform. He's a doer. He uses No. this body. No, Atma doesn't do anything. He's Sakshi. Atma is just a Shakti. Okay, sir. Okay, sir. But I think, though, no, I'm trying to understand the mind. Basically, without mind, can we move on? Can we There's do no mind. anything? Where is mind? What are you talking about mind? Where is No, the no, no. mind? Whatever it is. Because the mind, we say karmas, sanskars. No, there is no. No, I have to correct you as you're talking. I have to correct you. So Okay, where is sir, the okay. mind? आपने mind को Mind- देखा है? No, I said it is no mind. So if it is, agar ye imaginary word bhi hai, but we say that because of karmas we are moving on, because of sanskars we are moving on, because of intellect we are moving on, we are performing Rajendra whatever ji, we have to perform. राजेंद्र जी, अगर mind नहीं है तो क्या है? Mind नहीं है तो फिर आत्मा ही तो रह गई ना. No. Mind नहीं है तो क्या है? Mind नहीं है, thought है. Thought है. Yes. Thought जब एक thought आता है, वो mind नहीं है. जब thought becomes 100 thoughts, 200 thoughts, 500 thoughts, it becomes a mind. वो ख्यालों का गुच्छा. जब ये ख्यालों का गुच्छा है, तभी mind बनता है. सर ये इतना तो that I understand, but मकसद मेरा ये है, ये गुच्छा ही हमारी सांसारिक जीवन चलाता है फिलहाल. कैसे चलाता है? If we become servant of this गुच्छा, if we have to be the master of this गुच्छा. What I want to convey. No, गुच्छा को बनने ही नहीं देना है ना. गुच्छा को काटना है. ना काटने छोटे, अभी वो छोटे बच्चों के लिए. अभी आप आगे बढ़ चुके हैं. अच्छा. अभी आपको माइंड स्टेट में नहीं रहना है. जैसे किशन ने बात किया. किशन ने बोला डे एंड में उसका माइंड उसको गुस्सा दिलाता है. नहीं, you must be in consciousness. You must be in consciousness means you should not permit the mind to exist. You should let mind is nothing but thoughts that pour like rain. They will push you down the drain again and again. Stop it and build a dam. ये thinking को slow करो, thinking को बंद करो. Intellect को मतलब intellect को जगाओ. Lock yourself in the intellectual Satchidanand. Lock yourself in consciousness. ठीक. It was a riddle, sir. riddle नहीं, सुनिए, ये माइंड ही करता है. ये जो किया अभी किसने किया आप में? अभी किसने किया ये आपको? माइंड ने किया. माइंड ने किया ना. अभी आप वापस 2 मिनट में कैसे शांत हो गए आप? Because immediately you went back to consciousness. It just started with a moment to tell you that ये माइंड ही कराता है, काम कराता है, शादी कराता है, बच्चे पैदा करते हैं, ये माइंड ही है. But basically next time माइंड की बात है, बोलो माइंड कहाँ है? नहीं माइंड. है नहीं, माइंड is not there. Bliss, thank you. Bliss. Dear, as I'm not able to explain my thoughts rightly, you can write what I
You have written? I write. Yes, okay. Bridget says, mind creates the fear of ignorance, but with confidence and experience, we reach a higher level of consciousness, right? See, mind creates the fear and ignorance, but this confidence and experience is not there. This confidence and experience also can be wiped out by the mind. You need to be in consciousness. You need to have intellect. Please be very clear. You need two things. You need to be in consciousness. In consciousness, you must activate intellect. When you have intellect, then confidence and the right decision, willpower, discrimination, all will come only when you are in a state of consciousness. I understand. We don't have much time, but quickly, Rekha, Rajni, Lakshmikant, and Vijay. Yes, Rekha. Shubham, Shubham, bol Rekha. This body suffering is due to karma. Absolutely. So it will be like Pranat or Agami, both. Obviously, it is a combination of both. Both the Nadi became one. The Ganga was two, Alaknanda and Bhagirathi. When it becomes Ganga, when Alaknanda and Bhagirathi are two separate rivers, they come together, they become the Ganga. Your past karma, your present karma has merged and it has become your twin karma. It is one now. And your body is suffering, you are not suffering. Yes. The moment you start to suffer means you are not Neti Neti Tattvamasi. Then you will suffer. Yes. If the body suffers, you say, my body is having pain, but I am okay. Yes. And the body is having pain only because of twin karma. No other reason. So you accept without protest. And you surrender in consciousness. Without fear, without worry. Yes. Yes. Because the Atma which you are is not capable of pain or suffering. Yes. But be that. If you are not that, you will suffer. Yes. Okay, Rajni, quickly, Rajni, thank you. Rajni, quick, you have to unmute. Rajni, Lakshmikant ji, aapko kuch kehna hai, and then Vijay Kumar. Rajni. हेलो. Yes, Rajni. सर मुझे आपसे पूछना था, हिंदी कंफर्टेबल है और आई शुड स्पीक इन इंग्लिश. बोलिए. सर, अगर गुरु चाहे तो क्या वो अपने शिष्य को सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकता है फॉर लिबरेशन? नहीं करवा सकता है. गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, गुरु आपको मेथड दे सकता है, गुरु आपको इनिशिएट कर सकता है. मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इनिशिएट? मतलब दीक्षा. हाँ, वो दीक्षा दे सकता है. दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको ऑटोमेटिक मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा. गुरु का मतलब है गुरु, जो गु अंधकार से लेके रोशनी में ले जाए. गुरु का मतलब ही वो है. तो गुरु आपको राह दिखाएगा, गुरु आपको हाथ पकड़ के आगे जाएगा, लेकिन चलना आपको है. सर, हम तो कोशिश करेंगे. हम तो कोशिश करेंगे ही, बट अगर कोशिशें भी कामयाब ना हो तो गुरु अपनी शक्ति से. सुनिए, आप लास्ट वीक के कॉल में थे, कहना गुरु है, कहना गुरु मेक यू एनलाइटेंड. आप थे वो लास्ट वीक के कॉल में? आप नहीं थी. मैं सारी संडे को नहीं थी. नहीं, कुछ दिन पहले हमारा एक टॉपिक था, कैन द गुरु, क्या गुरु आपको अनुभूति दे सकता है? तो कुछ लोगों ने 5-10 लोगों ने कहा नहीं दे सकता है, 5-10 लोगों ने कहा हाँ दे सकता है. हमारा जवाब था उस कॉल में, जैसे आप सोचेंगे वैसे होगा. अगर आप सोचेंगे गुरु आपको अनुभूति दे सकता है, वो होगा. अगर आप सोचते हैं गुरु आपको अनुभूति नहीं दे सकता है, वो नहीं होगा. बिकॉज अगर आप सोचते हैं वो होगा तो आप गुरु की राह पे चलेंगे. अगर आप सोचते नहीं होगा तो आप उसकी राह पे कभी नहीं चलेंगे. Lakshmikant, quick comment. Vijay Kumar, quick comment. We are much beyond the time limit. Lakshmikant, quick comment, please. हेलो सर. बोलिए. ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा रीबर्थ का, हाँ, तो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है. ओके. हाँ. कहते हैं ऐसा लोग कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं या फिर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है तो हम उस परमात्मा में विलीन हो सकते हैं. अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है या फिर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर हमारा रीबर्थ होता है, वो
बुरे कर्म भुगतने के लिए। अगर आप लक्ष्मीकांत, ये क्वेश्चन हम आपको कल ज्यादा में बोलेंगे, लेकिन अभी मैं क्या इतना बोल रहा हूँ, आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो भी रीबत होगा, आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी रीबत होगा। ओके। आप कर्मों से मुक्त होंगे तभी रीबत नहीं होगा, नहीं तो रीबत होगा ही होगा, बिकॉज आपने बीज बोया है, आपने बीज बोया है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। But please come tomorrow and we will answer the question in detail. Vijay Kumar, last comment, we are closing. Vijay Kumar. Namaskar, Guruji. Namaskar. Guruji, it's very simple. How to annihilate the prarabdha karma and how not to add up the anarabdha karma? Very simple to close the session. How to annihilate the prarabdha karma. The prarabdha karma and the agami karma has become twin karma. That karma, your karma. There is only one way to annihilate the karma, to realize it is not your karma. It is not your karma. It belongs to body, mind, ego. You are not the body, mind, ego. Therefore, the karma belongs to somebody else. It does not belong to me. With folded hands and apologies for so much delay, I really apologize. With folded hands, bow down to you.